Hello friends, in this short video we will learn difference between RAM and ROM. Let's start our lecture. RAM. RAM is a volatile memory which means that the information temporarily stored in the module is erased when you start or shut down your computer because the information is stored electrically on transistors. When there is no electric current, the data disappear. Random, which is called random access memory, और रैम कंप्यूटर की वॉलेटाइल मेमोरी है जो कि इंफॉर्मेशन को टेम्पररी तौर पर एक मॉड्यूल में सेव करवाती है। जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं या शट डाउन करते हैं तो वो जो हमने काम किया था वो डेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांजिस्टर्स पर सेव होती है। तो आप जब कंप्यूटर को ऑन या ऑफ़ करते हैं तो वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं या करंट जो है वो डिसअपियर होने की वजह से वो सारी डेटा वहाँ से इरेज हो जाती है। इट मीन्स वी कैन सेव डेटा फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन रैम। जब कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी चल रही होती है तो उस वक्त वो सारी डेटा उस कंप्यूटर में रैम में सेव होती है। ROM, which is called read-only memory. ROM is a non-volatile memory, which means the information is permanently stored on the chip. The memory does not depends on electric current to save data. Instead, the data is written to individual cells using binary code. ROM एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जिस इट मीन्स इंफॉर्मेशन परमानेंटली तौर पर चिप के ऊपर सेव होती है। द मेमोरी डज नॉट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट, दैट मीन्स वो हमारी डेटा वो मेमोरी जो है इलेक्ट्रिक करंट पर बेस नहीं करती। तो जो हमारी डेटा है वो रिटन फॉर्म में इंडिविजुअल सेल्स के ऊपर बाइनरी कोड या बाइनरी लैंग्वेज में सेव हो जाती है। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो लैंग्वेज आप कहें, वो कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर में जो भी हम काम या कोई भी टास्क हम परफॉर्म करते हैं तो कंप्यूटर उसको बाइनरी लैंग्वेज में लेकर फिर वो डिफरेंट कन्वर्टर्स को यूज़ करते हुए हमारे डिस्प्ले के ऊपर जो है वो सारे डेटा को शो करवाता है। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द रैम एंड रोम। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।